गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों की आज तो स्टार्टिंग से क्वेरी है छोटी छोटी सी। क्या है? मिस्टर अभय इज सेइंग सर आई वांट टू जॉइन द कोर्स, प्लीज आई मस्ट से द वेलकम। रुचिका सर, हाउ टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन? बेटा वेट फॉर 5th July, आई विल डेफिनेटली टेक द फुल लेक्चर ऑन द प्रेजेंटेशन, so just wait. Naveen Sharma ji, sir, I am from Hindi medium. Can you teach me from Hindi medium? अरे आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, जरूरत क्या है हिंदी मीडियम की? लेकिन वैसे मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ा रहा हूँ बच्चे। मैं रिपीट करता हूँ, हिंदी का जो पढ़ाया वो इंग्लिश में और जो इंग्लिश में पढ़ाया वो हिंदी में रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लो। और क्या है? तो गुड आफ्टरनून ओम गुप्ता जी, रूहानी, खुशी, कोमलप्रीत, मनीष सेइंग गुड आफ्टरनून हमारे प्यारे गुरुजी, थैंक यू मेरे बच्चे। गुड आफ्टरनून जिग्नेश, पवित्रा, साई, पंकज, रितु, गौतम, मिस प्रसन्ना, मिस पी यामीन, अपूर्वा, कीर्ति, जानवी, संत कुमार, प्रतिमा, गुड आफ्टरनून। प्रकृति, स्नेहा, रुचिका, कशिश, चंचल, गुड आफ्टरनून। खुशी is asking sir please tell something about new scheme of CA। बेटा अगर मैं बताने में बैठ जाऊंगा अभी तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा। उसके इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी वीडियो डाले हुए हैं, आप उस पर एक बार रेफर कर लो, ठीक है ना? अपने को आज ये चैप्टर क्लोज करना है। कशिश गुड आफ्टरनून, प्रवीण, दिव्येंदु, हर्षिता वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, प्रेम, गौतम, सूरज, सुचियांग, सहना, आनंद गुड आफ्टरनून, अमर, आदित्य, पंकज गुड आफ्टरनून। Sir, in Indian Contract Act, telegram is preferred over post if it is the case of revocation। देखिए टेलीग्राम और ये पोस्ट ऐसा ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि क्या चीज होनी चाहिए। मेन पर्पस है आप पे इंफॉर्मेशन पहले पहुंचनी चाहिए। और कौन है भाई? सलोनी, दिविशा, सौम्या गुड आफ्टरनून, बोमकेश गुड आफ्टरनून, शुभी, तेजा, मनीषा, आशा बेगम गुड आफ्टरनून, पुनीता, दिव्येंदु गुड आफ्टरनून। रुचिका सिंह सर आपकी रिकॉर्डिंग देखी थी, उससे इंस्पायर होकर ही मैं यहाँ हूँ। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट। हिमांशु, आयशा, जिग्नेश, और कौन रह गया? सब हो गए बच्चों। चलो मैं तो सबको गुड आफ्टरनून वंस अगेन। अब स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, ठीक है? सो फर्स्ट उससे पहले अपन क्या करेंगे? वी शुड हैव रिवीजन। चलिए, discharge of contract means termination of contractual relationship between the parties. In other words, a contract is said to be discharged when either of the parties is no more liable to the contract। जब liability is end हो जाती है, यानी कि you have not to perform anymore, that is called discharge of contract, right? So what are the modes, what are the ways? First is by performance two ways: actual performance and the tender performance। Tender performance means offer to perform or attempted performance. By mutual consent, novation, new contract, it may be between same parties, it may be between different parties. Rescission means cancellation, alteration, change of some terms in the contract, but parties should be same. Remission, discount, waiver, 100% discount, fully discount, merger when inferior right merge with the superior right.
impossibility of performance, destruction of subject matter, death or disablement in case of personal services, performance becomes subsequently illegal, war is declared, or non-existence of state of things. Operation of law means compulsory by death, by insolvency, by merger, by unauthorized alteration in a written document. By breach of contract, anticipatory breach and actual breach. Actual breach कब होती है? When on the due date or during the performance. Anticipatory before the due date of performance. By lapse of time when contract become time bound. These are the contracts which need not to be performed. यानी कि इन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. If the parties mutually agree to substitute the original contract by new one or resign it or alter it. यानी कि पार्टी ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नोवेशन रिजाइन कैंसिल कर दिया या ऑल्ट्रेशन कर लिया, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है दैट नीड नॉट टू बी परफॉर्म. इफ द प्रॉमिस इज डिस्पेंस विद, डिस्पेंस मतलब उपचार करने को बोलते हैं. डिस्पेंस यानी कुछ और मैटर से उसको बेनिफिट मिल गया. with or remits wholly or in part the performance of promise made to or extend the time for such performance or accept any satisfaction for it. यानी किसी और तरीके से हमने उसको पूरा कर दिया, उसकी जो चीज रिक्वायर्ड थी वो हमने पूरा कर दिया. If the person at whose option the contract is voidable resigned it. अगर कॉन्ट्रैक्ट voidable है तो जिसके पार्ट को voidable था वो रिजाइन कर देता है, तो जो दूसरी पार्टी है तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. Promiser bound to perform, but promisee neglects for performance or refuses, or if contract become illegal. So in these cases, contract need not to be performed. So please prepare this sheet, then we will start the test. Miss Hingolekar Prasanna is asking, sir, for CA exam, practice only study material, question and answer sufficient, and please also refer the at least 5 to 10 attempts papers, examination papers, suggested answer मिल जाएंगे आपको site पर. Please refer all these. Sir, in exam we should write as your PPT or same as book given in the explanation. देखिए PPTs are there for the purpose of understanding the provisions. Books में bare provisions है, तो I think you should prefer the book. Start करें बच्चों. चलिए. So today's guest are Motu Patlu. They will give the answers of the today's question. So ready for that? Sakshi is asking, sir, which lesson is of highest weightage? Sakshi, I have already discussed in the first lecture. Please एक बार वो sheet देख लीजिए, सब लिखा हुआ है. An agreement to do an act impossible in itself is void, voidable, valid, illegal. The answer is it is void. Next question. A contract containing an undertaking to do impossible act is void ab initio, voidable, valid, illegal. Sakshi, you need not to send the answer, beta. बिटिया सर हेडिंग ये है सेल्फ असेसमेंट. आपको अपने आप को चेक करना है, तभी तो आदत पड़ेगी आपको. The answer is the best option is void ab initio. Next. When after the formation of a valid contract an event happens which makes the performance of contract impossible, the contract becomes void, voidable, valid or illegal.
The answer is it is void. A agreed to let a music hall to B for holding music shows on certain dates. Before any show was organized, the music hall was destroyed in accidental fire. In this case, the contract becomes void and is discharged. Voidable at A's option, void but not discharged, voidable at B's option. The answer is it is void and discharged. Next question. A agreed to supply some goods to B, which were to be procured from C's factory. Due to strike in C's factory, A could not supply the goods. The contract is discharged, not discharged, becomes voidable only, becomes unlawful. This is the tricky question. सोचिए इसको. एक बच्चा पूछ रहा है सर आंसर पॉइंट में लिखना है पैराग्राफ में. बेटा 5 तारीख तक वेट करो, सब बताऊंगा. आज जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ो. आपको आंसर्स नहीं भेजने हैं मुझे, आपको अपने आप को चेक करना है. ठीक है ना. द आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज. ए ने कॉन्टेक्ट किया बी से कि वो सप्लाई करेगा जो माल सी की फैक्ट्री से आना है. सी ने अगर सप्लाई नहीं किया तो इससे ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी. A agreed to supply certain goods to B, which were to be imported by C, but C failed to import the goods. In this case, the contract is discharged, not discharged, voidable, impossible to perform. The answer is not discharged. A owed rupees 5,000 to B, A paid rupees 4,000 to B, and B accepted in full satisfaction. In this case, A is discharged from his liability of rupees 5,000. A remains liable for the balance of rupees 1,000. Contracts become voidable at B's option. A is discharged from his liability, but the contract is not discharged. Please read it carefully. The answer is A. जब उसने फुल सेटिस्फेक्शन में 4,000 रुपए ले लिए तो लाइबिलिटी जो 5 ले रही थी पूरी तरह खत्म हो गई. इसे हम क्या बोलेंगे? रेमिशन. 8. A money lender lends rupees 15,000 to B for his business purpose. Subsequently, A at his own informs B that he need not repay the amount. Here, the contract is discharged by novation, satisfaction, performance, waiver. The answer is it is the case of waiver. Next. A contract is discharged if it is not enforced within the limitation period prescribed by law. The limitation period for the recovery of loan amount is 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. The answer is
3 years. The last question. Failure by the party to perform his obligation under the contract is known as breach of contract, failure of contract, performance of contract, none of these. The answer is it is the breach of contract. देखिए फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो का टर्म है ही नहीं है अपने लॉ में. So this was the test. Now the time for unit number 5. Unit number 5, the heading is breach of contract and its remedies. यानी कि we will discuss what are the ways of breach of contract and how the other party can get relief. Contract कैसे breach होगा, किस तरह कितना breach होता है, किस तरीके से breach होगा, और जो जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है उसे क्या मिलेगा, उसके लिए क्या उपचार है. राइट. ओके 10 on 10 वेरी गुड. काफी बच्चों के 10 on 10 आए हैं, क्योंकि अगर मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगा ना, सबके जिसके 9 भी आए होंगे ना वो 10 on 10 बोलेगा. तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अच्छा सुनो, लास्ट क्लास पे I will give you the complete summary of Indian Contract Act. राइट. आपको कंप्लीट समरी बना के दे दूंगा मैं एक साथ एक ही जगह. आप प्रिंट आउट निकाल लेना कहीं पर जहां भी आप रहते हो. प्लीज गेट द प्रिंट आउट ऑफ दोज समरी नोट्स एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जब भी आप रिवीजन करें तो पहले समरी को गो थ्रू कर लें, देन मेन टॉपिक्स. जब आप समरी को गो थ्रू करके मेन टॉपिक्स पे आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, आपको कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगाई देगा. So that will help in revision in learning the provisions. ठीक है. Someone is asking, sir, what is the difference between breach, performance and failure? Performance और breach दोनों अलग ही हैं. Performance माने काम को पूरा करना, to work and to complete the obligation, or breach not to complete the obligation. Breach and failure may be the same words, but in law the breach is recognized, failure is not recognized. Breach is certain term, breach of contract. ठीक है, इसलिए टॉपिक क्या था वो breach. Sir, where can I get previous year questions? Go to the ICI site, Board of Studies, then there is suggested answer, वहां पर होंगे. You can download the attempt wise question and their suggested answers from there. Right. So start करते हैं unit 5 breach of contract and its remedies. Sir, what is the difference between discharge and breach of contract? Breach of contract is the way of discharge of contract. कल डिस्कस किया था बच्चे ने लास्ट क्लास में. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? Breach of contract means failure of a party to perform his or her obligation under a contract. मतलब कि जो आपको काम करना था कॉन्ट्रैक्ट में वो आप नहीं कर पाए, इट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द वर्क यू हैव टू डिसाइडेड टू डू इन द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट डूइंग दैट, इट्स कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो आपको काम करना था आप नहीं कर पाए. व्हाट आर द वेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the breach of contract may arise in two ways: actual breach of contract and anticipatory breach of contract. So what is the actual breach of contract? Actual breach of contract may be committed two places: at the time when the performance of contract is due. See the example number 1. A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2012. On the said day, he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is actual breach of contract.
the breach has been committed by A at the time when the performance becomes B. यानी कि 1 फरवरी 2012 को 100 बोरे चीनी के देने थे, उस दिन वो नहीं दे पाया, यानी कि at the time performance is due, it is called actual breach. One more way of actual breach is during the performance of contract. Actual breach of contract also occurs when during the performance of contract, one party fails to refuse to perform his obligation under it by express or implied act. Suppose I have taken a contract to supply 100 bags of sugar, take the example, continuing the first example, and after delivering 20 bags, I denied to supply rest 80 bags. 100 बैग सप्लाई करने थे, 20 कर दिए मैंने, उसके बाद मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा. दिस इज अगेन द केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच. दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. राइट नाउ एंटिसिपेटरी ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच is there when a party repudiates it before the time fixed for performance. यानी कि जो टाइम फिक्स था परफॉर्मेंस के लिए, उससे पहले ही आप मना कर देते हो कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे. See the example number 2, where a contract with B on 15 July 2020 to supply 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August 2020, and on 30th July inform B that he will not be able to supply the said cotton on 14th August 2020. There is an express rejection of the contract. क्या कॉन्ट्रैक्ट है? 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 10 बेल्स, 10 बंडल कह सकते हैं, 10 बंडल कॉटन के 14 अगस्त को सप्लाई करेगा, लेकिन 30 जुलाई यानी 14 अगस्त से पहले ही उसने मना कर दिया कि वो सप्लाई नहीं कर पाएगा. दिस इज द केस ऑफ एंटीसिपेटरी breach of contract. Right? What are the consequences of anticipatory breach? The promise may either resign the contract or treat the contract as at end and at once sue for the damage. मतलब जिस समय इंफॉर्मेशन मिली उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को हम रिजेक्ट मान लेते हैं, कैंसिल मान लेते हैं, ठीक है, और सूट फाइल कर देते हैं कॉम्पनसेशन की. इन एग्जांपल नंबर 2, इफ वी डिसाइडेड टू फाइल द केस ऑन 30th जुलाई, पॉइंट ए विल बी एप्लीकेबल. ए का मतलब है कि जब जिस दिन 30 जुलाई को मना किया ए ने कि भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, बी ने उसी दिन क्या मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब मुझे सूट फाइल करना है, जो नुकसान हुआ उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम करना. बी पॉइंट, he may elect not to resign but to treat the contract operative and wait for the time of performance and then hold the party liable for the consequences for non-performance. यानी कि he should wait up to 14th August and on 14th August he will file the suit for compensation. कि वो 30 तारीख को इंफॉर्मेशन मिल गई, 30 जून को इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन वो क्या कर रहा है कि भैया अभी हम सूट फाइल नहीं कर रहे, हमें लगता है शायद वो चेंज हो जाए. तो हमने क्या किया, हमने 14th अगस्त जो ड्यू डेट थी उस तक वेट किया और उसके बाद सूट फाइल किया. तो 2 ऑप्शन होते हैं इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच. प्लीज रीड इट केयरफुली, ए एंड बी. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड एक्ट? आई थिंक यू आर नॉट इन द फर्स्ट क्लास. पूरे फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए हैं बच्चे. इम्प्लाइड मीन्स बाय कंडक्ट. रेपुडिएट का मीनिंग उसको डिनाई करना, रिजेक्ट करना. रिजाइन मीन्स कैंसिल. एंटीसिपेटरी बिफोर ड्यू डेट अभी तो बताया बच्चे. एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, और अगर डिक्शनरी वर्ड चाहिए तो एक बार डिक्शनरी को रेफर कर लो, ठीक है ना. बट सर बी इन्फॉर्म बिफोर ड्यू डेट, देन हाउ ए सू फॉर डैमेजेस. देखिए भैया, एक भाई साहब पूछ रहे हैं हमारे कि सर बी ने तो ड्यू डेट से पहले इन्फॉर्म कर दिया, अब कॉम्पनसेशन किस बात का? भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 15 जुलाई को. तो जब आप मान लीजिए, चले आपके मान के चलते हैं
मैं भाई साहब की बात ही कर रहा हूँ कि भाई साहब ने गाड़ी बुक कराई, ठीक है साहब, और गाड़ी बुक करा दी इन्होंने। कौन सी गाड़ी बुक कराई? बढ़िया सी गाड़ी लेते हैं, ऑडी बुक कराई 15 जुलाई को, और सप्लाई कब होगी वो, कब डिलीवर होगी वो? 14 अगस्त को। 30 को कंपनी ने भाई साहब को फोन किया, भाई साहब गाड़ी वाड़ी भूल जाओ, कुछ नहीं है गाड़ी वाली। अब क्या करोगे आप? तो आप ये तो नहीं कह सकते ना, कंपनी ये तो नहीं कह सकती सर मैं तो पहले से इन्फॉर्म कर दिया, अब हम पे कुछ केस फाइल नहीं होगा। आप फूड फाइल नहीं करोगे? भाई साहब मेरे को तो घर में शादी है, मेरी सिस्टर को देनी है, गिफ्ट करनी है गाड़ी। तो ऐसा नहीं होता ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लॉ तो यही कहता है ना, जब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो लीगली गुड है, फिट है, तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा, राइट? See the example. I have discussed this example in the previous class also. Please read it carefully. Sir, what is the meaning of discharge? Please refer the last class. Bache, I have already discussed this topic, discharge of contract. Even I discussed in the today starting of today's session. So please एक बार उसको recording check कर लीजिए. Please see the recording. So anticipatory breach of contract, example number 3, I have already discussed this example with you in the last class. X agrees to sell to Y a certain quantity of wheat at rupees 100 per quintal to be delivered on 3rd March. On 2nd February, X gives notice expressing his willingness to sell wheat, and the price of wheat on that date is rupees 110 per quintal. If Y repudiates the contract forthwith, he would be able to recover the damage of rupees 10 per quintal. 10, how 10 is calculated? Difference of 110 or 100. If instead of taking the action forthwith, he keeps the contract alive till the 3rd March, and in the meantime, the price increases to 125 per quintal. On that date, Y would be able to recover damages at rupees 25 per quintal. X ने कॉन्टेक्ट किया Y को कि वो 100 रुपए किलो पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं की सप्लाई करेगा 3 मार्च को। 2 फरवरी को उसने मना कर दिया, मैं सप्लाई नहीं कर सकता। Now Y has the two options, whether he should file suit or claim the compensation on that day, or he should wait for the date of performance. So if Y decided to file the suit at the same time when he got the message from X of non-delivering the goods, at that time the price of the wheat was 110, so he can claim the compensation, because now Y has to purchase the wheat at rupees 110 from the market, or actually he has already contracted with X for supply at 100 rupees, but because of rejection, breach of contract by X, Y has to purchase the wheat at rupees 110. So there is a loss of rupees 10 per quintal to Y, and Y can claim this amount from X. But instead of that point, Y decided to wait up to 3rd March, and on that date he decided to file the suit against the X for the claim of compensation. And at that time, the price of wheat is 125. Now Y has to purchase the wheat at rupees 125 instead, and for which he has contracted at rupees 100 per quintal. Now the loss extra payment by Y is rupees 25, and that can be claimed from X. X ने 2 फरवरी को मना कर दिया, उस वक्त प्राइस 110 रुपए था, तो अब Y को जो माल 100 रुपए में मिल रहा था वो 110 में खरीदना पड़ेगा, 10 रुपए का लॉस हुआ, वो क्लेम करेगा। अगर Y ने डिसाइड किया कि वो 125 पे 3 मार्च को जाएगा और 3 मार्च को प्राइस 125 था, तो वो कितना कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है? 25। One more important thing, if on the other hand, during the intervening period between 2nd February and 3rd March, the private sale of wheat is prohibited by the government, the contract would become void and Y would not be able to recover the damages. Means, अगर मान लीजिए इस बीच में 2 फरवरी को he has not taken the decision to file the suit for claiming the compensation, he is waiting over 3rd March. During this period, government had decided to restrict the private sale of wheat. In that case, Y cannot claim any amount from X for compensation, क्योंकि अब वो पॉसिबल ही नहीं है, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड।
So in case of anticipatory breach of contract, is it void contract or voidable? देखिए कॉन्ट्रैक्ट अब जब he is not supplying, he is not performing, then he is made the breach of contract and other party can claim the compensation. कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, उसने परफॉर्म ही नहीं किया, तो अब जब परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, उससे हम डिस्चार्ज कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को, कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाएगा. Shoaib is asking, sir, if the price went down, let's suppose the price comes to rupees 90 on 3rd March. In that case, X will be willing to supply. क्योंकि X को तो कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए में हुआ था. Now he can purchase at rupees 90 and sell at rupees 100. Right? भाई X तो 90 में माल खरीद के 100 में बेच दिया, 10 का फायदा से मिल रहा है. X कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं करेगा. So now come to the remedies for breach of contract. See. Any other query from your side, बच्चों? On actual breach or anticipatory breach? Komal is asking, sir, if buy sue after due date, he can claim damages. He has to take the decision. Okay, time, listen. Limitation Act we have discussed last class. Time barred contract we have already discussed. So he has the right to claim as 3 years. 3 साल में claim कर सकता है, लेकिन जो compensation and the compensation will be decided on the basis of the price on 3rd March. ठीक है. जानवी, आई एम नॉट गेटिंग योर प्रॉब्लम. प्लीज एक बार क्लियर करें, क्या पूछना चाह रही हैं आप? जानवी, प्लीज क्लियर व्हाट यू वांट टू आस्क. Keshav is asking, sir, if he buys wheat at 110 but doesn't sue X at the time, then he claim compensation for 125? Okay, the compensation will be decided on the basis of date on which claim was filed up to 3rd March, right? So 3rd March ko he is asking, sir, if he buys wheat at rupees 110 but does not sue X at the time, then he can claim the compensation 125. बच्चे 125 अगर उसने he has decided to file the case or file the suit on 3rd March, he can claim at rupees 125. He can claim at rupees 25 per quintal, right? सर किसी इमरजेंसी के कारण डिले हो गया तो क्या होगा? भारत बंद, इमरजेंसी कर्फ्यू एटसेट्रा. You have to prove that you were unable to perform. Difficulty is not impossibility. You have to perform. You have to prove that it was impossible to perform. ठीक है. So what are the remedies? प्रेम कुशवाहा सर कोई क्वेरी नहीं है. अपूर्वा सर कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. ओके बच्चे. Suit for damages यानी suit for compensation, rescission of contract, cancellation of contract, suit for quantum merit, suit for specific performance, suit for injunction. So we will discuss each and every point one by one, right? Teja ji, please, Mr. Teja, please wait. I am taking each and every remedy one by one. So please wait. Suit for damages. What is the meaning? You can write in your notes, suit for damages means suit for compensation. And suit for damages means monetary compensation awarded to person. जो खामियाजा हमारा हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके लिए जो मिला पैसों के रूप में, that is called compensation or suit for damages. Right? Now there are some types of damages. First, ordinary damages. Please write, ordinary damages means compensation equal to loss.
कॉम्पनसेशन इक्वल टू लॉस, जितना नुकसान हुआ उतना कॉम्पनसेशन हम क्लेम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस. We are actually claiming the loss, it is called ordinary damages. So ordinary damages are those which are naturally arise in usual course of things from such breach. The measure of ordinary damage is the difference between the contracted price and the market price at the date of breach. See the example. A contracts to deliver 100 tons of oil at rupees 100 per ton on future date. On the due date, he refuses to deliver. The price on that day is rupees 1100. The measure of the damages is the difference between the market price on that date, on the date of breach, and the contract price. So that is the 10,000. How 10,000 calculated? 100 rupees per ton for 100 ton. 100 rupees per ton for 100. 100 टन ऑयल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 रुपए टन पर, लेकिन डिलीवरी पर मना कर दिया गया. उस वक्त प्राइस क्या हो गया? 1100 रुपए, 1100. Now the buyer has to purchase at rupees 1100, so he has to face the loss of rupees 100 per ton. He can claim the compensation at rupees 100 per ton for 100 tons, that is rupees 10,000. कितना क्लियर है बच्चों? अच्छा, Miss Janvi is asking, sir, what will happen if demonetization takes place at the time of contract? Will it void similar in case of war? If demonetization हुआ, then payment may be made in other mode, na? It cannot be void, na? Sir, Bhumika is asking, sir, compensation will be decided by the date or the price of the wheat per quintal. देखिए, compensation will be decided in case of anticipatory breach on the basis of rate on the date at which suit was filed. ठीक है? Sir, breach at due date is actual breach, but what about claim? The claim will be made on the basis of the price. See the example number 14. Sir, if the price is 90, then X have to suffer loss. No, X will be gain. X will be in gain. By he is getting his supply at rupees 100 and the price is 90, so he is getting the benefit of rupees 10. कोई एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर प्राइस 90 हो गया तो एक्स को लॉस होगा 10 रुपए का. नहीं, एक्स को 100 में बेचना है, 100 का पैसा मिलेगा और खरीदना कितने में? 90 में. तो फायदा हुआ ना 10 रुपए का. रूहानी जैन, एब्सोल्युटली क्लियर सर. ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं. सो ऑर्डिनरी डैमेज मींस actual loss, claiming the compensation which is equal to the actual loss. Please note this point. Second, as my note, this is important, and the case law may be framed on this point. मिस्टर कशिश बजाज कह रहे हैं, सर 100 टन्स ऑफ ऑयल रुपीज 1000 इक्वल टू 1 लाख, नॉट 10,000. भाई साहब, आपने 1000 में तय किया, 1100 का हो गया, तो लॉस तो 100 रुपए का ही हुआ आपको. यानी कि जो चीज आप 1000 में खरीद रहे थे वो आप 1100 में खरीदोगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो 100 का तो लॉस हुआ. 100 रुपीज का लॉस हुआ आपको एक टन पर. कितना टन के लिए कॉन्ट्रैक्ट था? 100 टन का, 100 टन का. तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000. प्लीज क्लियर कर लीजिए ये. अमित जी, प्लीज वेट फॉर योर क्वेरी, अभी आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है? तो नोट, compensation cannot be claimed for any remote or indirect loss or damage by reason of breach. Please underline. Cannot be claimed for any remote or indirect loss. See the example.
A railway passenger wife caught cold and fell ill due to her being asked to get down at a place other than the railway station, and she had to walk a long distance in the cold night to reach home. In a suit by the plaintiff against the railway company, plaintiff means the person who files the suit. Plaintiff means the person who files the suit. It was held that damages for personal inconvenience of the plaintiff alone would be granted, but not for the sickness of the plaintiff. क्या केस था? एक ट्रेन में कुछ पैसेंजर, एक कपल जा रहा था, बुजुर्ग कपल था, ट्रेन खराब हुई, रास्ते में उतार दिया गया। उस रात में रास्ते में उतार दिया गया, रात को ठंड बहुत थी, तो उनकी जो पैसेंजर थी उनकी वाइफ को ठंड लग गई, बीमार हो गई। उन्होंने कॉम्पनसेशन क्लेम किया रेलवे से कि सर हमें एक तो खर्चा हुआ, हमारा हमें इनकन्वीनियंस हुई, हमारा खर्चा हुआ, हमें दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ी, भी खर्चा करना पड़ा, साथ में मेरी वाइफ जो बीमार हुई उसका भी मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए। तब कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी वाइफ का जो बीमार होना है वो इनडायरेक्ट लॉस है, इसके लिए लॉ आपको कॉम्पनसेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट वाज द केस? In case of breach of contract, only the direct loss will be compensated. Indirect loss will not be compensated. What was the case in example number 5? A couple was traveling by train, and due to some technical error, the couple has to leave the train in the midnight of a cold winter night. And because of this, the wife of the passenger got ill because of cold. The couple filed the suit to railway for the claiming the compensation for personal inconvenience. That is, so you can say, jo kharcha hua, you can say what was the expended for traveling to the home, or also for medicines for the wife. But court said that compensation can be claimed for the direct loss. Direct personal inconvenience is direct loss, you can claim, but getting ill due to weather, it is the indirect loss, and railway will not be liable. So one thing you must remember, that compensation can be claimed only for direct loss, not for remote or indirect loss. Please underline, compensation cannot be claimed for any remote or indirect loss. Okay? I think someone is asking, sir, what is the meaning of plaintiff? मुझे पता था, इसलिए मैंने 2 बार बोला, plaintiff means the person who files the suit. Plaintiff means the person who files the suit. अब आप सुनते ही नहीं है बच्चों, क्या करें? Someone is, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? Ordinary damages means compensation equal to actual loss. Compensation can be claimed for direct loss, not for indirect loss. This is the law. Now, special damages. Please note about special damages. Special damages are not connected with actual loss, but are decided at the time of making the contract. Please note, special damages are not connected with the loss, but decided at the time of making the contract. Okay, see the example, then we will come on the provisions. Damages, example number 6, a builder contracted to erect a house for B by 1st January in order that B may give possession of it at the time to C, to whom B was contracted to let it. A is informed of the contract between B and C. A builds the house so badly that before the 1st January it falls down and has to be rebuilt by B, who in consequence loses the rent which he was to receive from C, and is obliged to make compensation to C for breach of contract. A must make compensation to B for cost of rebuilding the house, for the rent lost, and for the compensation made to C. Please read कीजिए इसे, मैं आगे explain करता हूँ.
ए एक बिल्डर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो 1 जनवरी तक उस बी के लिए घर बना के देगा। इसके साथ ही बी का एक कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ था कि बी उस घर को सी को किराए पर दे देगा, राइट। बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी सी से जो कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ए को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आप मुझे घर बना के दोगे और वो घर में किराए पे दूंगा सी को, राइट। बी ए ने वो घर इतना खराब बनाया कि वो घर गिर गया, बी को सही करना पड़ा, और वो सी को घर किराए पे दे भी नहीं पाया क्योंकि घर बनने में टाइम लगा, सही होने में। अब लॉस क्या हुआ बी को? घर बनाने में खर्चा हुआ, दोबारा बनाने में, और सी का जो रेंट मिलना था वो नहीं मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्योंकि बी ने ए को पहले ही बता दिया था, इसलिए ए लायबिल होगा उस कॉम्पनसेशन को देने के। दिस इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। Once again, I am reading the example number 6. A entered into contract with B to build a house up to 1st January. B also entered with C to give that house on rent to C, and this contract was clearly informed to A. B has clearly informed to A that I have entered into a contract with C to give this house on rent. So please construct it within time. But the house was building was so bad that it falls before 1st January, and we has to incur the expenses on rebuilding. Also, he could not give this house on due date to C. That's why he has to suffer the loss of rent, which he could earn if he give the house to C. Now, A is liable to give B as compensation. What are these? Cost of rebuilding the house, rent lost, or if any compensation is given by B to C, that can also be claimed by B to A. अगर B ने कोई compensation C को दिया तो वो भी A से claim कर सकता है। चलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? Miss Apurva is asking, sir, but how plaintiff was direct and his wife indirect? No, plaintiff and his wife both are direct. But we are talking about the nature of loss. We are not talking about the person, passenger. Passenger direct and indirect नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि loss was direct or indirect. Suppose कि मैं टैक्सी से जा रहा हूँ और टैक्सी बीच में खराब हो गई, तो टैक्सी वाले की जिम्मेदारी है कि मुझे दूसरी टैक्सी अरेंज करे, जो खर्चा होगा वो देगा, वो मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए दूसरी टैक्सी से मुझे एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे, तो क्या उसका जो नुकसान होगा, जो मेडिकल खर्चा होगा, क्या वो भी मैं प्राइवेट टैक्सी से क्लेम करूंगा? आंसर इज नो, दैट इज द इनडायरेक्ट लॉस, राइट। Muhammad Shoaib is asking, sir, how will it be proved that B informed A? Is that by contact between A and B? देखिए, please once again, you all of you must listen. Law is there and help you only when you will prove your facts. Facts prove करने आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये कह रहे हैं वो सही है। कोर्ट में, कोर्ट will take the decision consulting the law on the basis of evidence provided by. ठीक है, तो कौन प्रूव करेगा? ये आपको करना है, जो भी क्लेम कर रहा है उसे प्रूव करना, राइट। सो स्पेशल डैमेजेस आर डैमेजेस other than those arising from the breach of contract, that is those other than ordinary damages may be recovered if such damages were decided at the time of making the contract. These can be claimed only if special circumstances which would result in a special loss in case of breach of contract are brought to the notice of other party. अगर आपने बताया था तभी आप उसे क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम। ठीक है,
प्रेम इज सेइंग सर, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉस कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ अदर पार्टी स्पेशल डैमेज। देखिए स्पेशल डैमेज का लॉस से, जो एक्चुअल लॉस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो डिसाइडेड होना चाहिए, वो इन्फॉर्म होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉल। ठीक है। पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है कब्जा, कब्जा करना, मतलब इसको पोजीशन में आ जाना कहते हैं ना, कब्जे में आ जाना, उस पर अपना अधिकार जताना। What if you don't paid for first taxi, then taxi driver arrange second taxi for you? कह रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टैक्सी को पेमेंट नहीं किया तो सेकंड टैक्सी को पे करना पड़ेगा हमें। तो अगर फर्स्ट टैक्सी को पे कर दिया है तो जो टैक्सी फर्स्ट टैक्सी वाला है वो सेकंड टैक्सी वाले को पे करेगा। क्लियर? Liability to pay vindictive or exemplary damages. Please listen. These damages are awarded only in two cases where breach of promise to marry or wrongful dishonor by banker of the customer's check. Actually, these damages are paid when you cannot measure the loss. You cannot measure the loss. जहां हम लॉस की कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, तो जो डैमेजेस दिए जाते हैं, compensation दिया जाता है, that is called vindictive or exemplary damages, and these damages are decided by the court. इसमें अमाउंट कितना होगा कॉम्पनसेशन का, वो डिसाइड कौन करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। केवल दो केस हैं, प्लीज रिमेंबर, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली देयर आर टू केसेस वेयर vindictive or exemplary damages are given, or you can say where in case of breach of marry promise to marry or wrongful dishonor by banker of the customer's check, which compensation is given called exemplary. भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू मैरी, मैरी कॉन्ट्रैक्ट की आपने की नहीं तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दूसरा, आपने चेक दिया लेकिन बैंक ने गलती से तो डिसऑनर कर दिया जबकि आपके अकाउंट में पैसा था, तो आपकी रेपुटेशन खराब हुई, डिसऑनर हो गए आप, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा? तो उसमें कौन डिसाइड करता है? कॉम्पनसेशन कोर्ट डिसाइड करता है, और उस डैमेज को क्या बोलते हैं हम? विंडिक्टिव और एग्जम्पलरी डैमेज, राइट? तो one more point for before the break. After break we will take we will continue this topic, and at last we will have the question answer, penalty shootout. So liability to pay nominal damages. The law says where there is no actual loss, but just to calm the ego of the plaintiff, it is provided. गलती हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हुआ, लेकिन पार्टी को लॉस कुछ नहीं हुआ, लॉस कुछ नहीं हुआ। उस केस में पार्टी ने प्लेंटिफ ने केस भी फाइल कर दिया पर लॉस हुआ ही नहीं, तो कॉम्पनसेशन नहीं बनता। उसमें मान लीजिए कोर्ट ने ईगो शांत करने के लिए कुछ कॉम्पनसेशन दे दिया, 1 रुपया 10 पैसा इवन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल डैमेजेस। So nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract, but he has not in fact suffered any real damage. It is awarded just to establish the right of to decree for the breach of contract. The amount may be a rupee or even a 10. तो क्या बताया मैंने? नॉमिनल डैमेजेस में एक्चुअल लॉस कुछ नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ पर लॉस नहीं हुआ, तो उस केस में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल डैमेज। Just wait. See the example. A firm consisting of 4 partners employed B for 4 period of 2 years, right? After 6 months, 2 partners retired. The business being carried on by the other 2. So B declined to be employed under the continuing partners, held he was only entitled to get the nominal damages as he had suffered no loss.
एक फर्म में 4 पार्टनर थे, उन्होंने बी को एम्प्लॉय किया 2 साल के लिए, 6 महीने बाद 2 पार्टनर छोड़ के चले गए। बी ने कहा भाई साहब बाकी 2 के संग मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मत करो भाई। आपको कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा? एक नॉमिनल। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि चारों लोगों के संग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 साल के लिए, 2 लोग छोड़ के चले गए, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन लॉस कुछ नहीं हुआ बी को। तो इसलिए बी को जो कॉम्पनसेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डैमेज, राइट। सर, money spent for filing case can be claimed. Yes, even for defending the case you can file the you can claim the compensation. जो भी आपका खर्चा हुआ, लीगल एक्सपेंसेस हुए, you can claim to claim the amount of the cost. यानी कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए जो खर्चा हुआ वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी आपका कॉम्पनसेशन का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। So at this place we are having a break of 10 minutes, and after 10 minutes we will rejoin. So please rejoin after 10 minutes. Okay बच्चों, बाकी इसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उसके बाद।
वेलकम बैक बच्चों। सौरभ इज आस्किंग सर, जब हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे तो क्या उसमें लॉयर की फीस भी क्लेम कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। मतलब जिससे 10,000 का कंपनसेशन और 5 ईयर लॉ की फीस, क्योंकि लॉयर अपॉइंट करने में हमारा ही खर्चा बढ़ा। डेफिनेटली बेटा, आपका जो भी खर्चा हुआ उस पैसे को क्लेम करने के लिए यू कैन क्लेम फ्रॉम द पर्सन। ठीक है, आगे बढ़े तो व्हाट वी हैव डिस्कस टिल नाउ, damage damages, classes of damages. First is ordinary damages, that is equal to actual loss, that is available for direct loss, not indirect loss. Second is special damages, that is the not loss, and that is not connected with the loss but actually decided at the time of making the contract. Third one is the vindictive or exemplary damages, the damages which is given in case of breach of promise to marry or wrongful dishonor by the banker of the customer's check. And fourth one is the compensation or damages, nominal damages. That is actually that was not a compensation, just to calm the ego in case of breach of contract. So आगे बढ़ते हैं. The last category, damages for deterioration caused by delay. जो डिले होने से नुकसान हुआ उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम करना. In case of deterioration caused to the goods by delay, damages can be recovered from carrier. carrier मतलब जो उसको लेके जा रहा है, even without notice. The word deterioration not only implies physical damage to the goods, but it may also mean loss of special opportunity for sale. जरूरी नहीं है कि लॉस हो, कि आपका फिजिकल लॉस हुआ इसलिए आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहे हैं. आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ी इस डिले की वजह से, तो भी आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते. A purchase, see the example number 8. A purchase of velvet for making caps for sale during the spring season. Due to delay in transit, he was unable to utilize it to the benefit during the season. Held that the fall in value of cloth arrived after season amounted to deterioration for which A was entitled to recover. क्या हुआ? A ने वेलवेट खरीदा क्योंकि उसे कैप बनानी थी और स्प्रिंग सीजन में बेचनी थी. माल की सप्लाई डिले हुई, जो कैरियर था वो समय पर सप्लाई नहीं कर पाया, इससे जो सब बेनिफिट मिलना था स्प्रिंग सीजन में वो नहीं ले पाया, तो उसके लिए वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई क्वेरी तो बताओ. कोई क्वेरी हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े. ओके, चलिए. नाउ द कंसेप्ट ऑफ liquidated damages and penalty. Liquidated damages and penalty. You can write this concept: compensation equal to loss is called liquidated damages. Listen, compensation equal to loss is called liquidated damages, and compensation in excess of actual loss, compensation in excess of actual loss is called penalty, is in the nature of penalty. जितना लॉस हुआ वो क्लेम कर रहे हैं, वो बोलते हैं उसे हम लिक्विडिटी डैमेजेस. उससे ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी. ठीक है. बिफोर प्रोविजंस यू शुड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. बिफोर दिस एग्जाम्पल एक पॉइंट था, ई पॉइंट, दैट इज द कॉम्पनसेशन फॉर डिले. अगर कैरियर या स्पीड, वो जो कोरियर वाले हैं उनसे कोई डिले होता है जिससे आपको लॉस होता है, तो उस डिले के लिए आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं. राइट? Saloni is asking, sir, how can the buyer estimate the lost sale when he can compensate from the other carrier? You are absolutely right, but it is decided by the court. वो कह सकता है सीजन है, सर्दियों का सीजन है, मुझे टोपियां बेचनी थी, टोपी लोगों की डिमांड होती है, वो बना नहीं पाया, उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए. एंड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विल डिसाइड बाय द कोर्ट.
प्रीफिक्स डैमेजेस यू कैन क्लेम, यू कैन से दैट इज स्पेशल डैमेजेस, प्रीफिक्स पहले से डिसाइड किए गए। ओके, so this is the example, please listen it carefully। ये एग्जाम्पल पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, प्लीज ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी 2022 को एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज on 1st January 2022, that is called date of contract, A and B are entered in a contract in which A has taken a loan of rupees 1000, which will be repaid on 1st April 2022 with interest of 10%। per annum की बात नहीं कर रहा हूँ, 10%। I'm not talking about per annum, it is 10%। But actually it was paid on 1st July 2022, right? 1st January 2022 is the date of contract, or you can say date of bond. 1st April 2022 is the due date of payment and on which default is made. So that's why it is also called the date of default. And 1st July, it is the actual date of payment। यहां तक क्लियर है? 1 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से 1000 रुपए लिए जो पे करने हैं 3 महीने के बाद 1 अप्रैल को विद 10% ब्याज के साथ, राइट? पर एक्चुअल में पेमेंट हुआ 1 जुलाई को। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को इस एग्जांपल में? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस एग्जांपल, प्लीज आस्क। ओके, सो अब लॉजिकली the actual date of payment, due date of payment is 1st April, but it is paid after 3 months, that is 1st July। So there should be an amount of interest in compensation for a period from 1st April 2022 to 1st July 22। yes or no? 1 अप्रैल को पेमेंट होना था, लेकिन पेमेंट हुआ 1 जुलाई को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट का कॉम्पनसेशन तो बनता है। क्लियर है इतनी बात? ड्यू डेट मतलब, वन पर्सन इज आस्किंग सर, ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन पेमेंट करना था, रीपेमेंट करना था बच्चे उसको, राइट? इफ B is charging interest at 10% from 1st April to 1st July, is it liquidated damages or penalty? ये liquidated damages है या penalty है आपके साथ? अगर B compensation चार्ज कर रहा है, compensation में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10% का, जो 10% ही रेट थी इंटरेस्ट की 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक की 3 महीने की, अब वो अगेन 10% और चार्ज कर रहा है। ही इज आस्किंग एडिशनल 10% फॉर द पीरियड ऑफ 1st अप्रैल टू 1st जुलाई। इज इट इन द नेचर ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी? प्लीज टेल मी, आप लोगों को जवाब दीजिए मुझे थोड़े से, कि 1 अप्रैल को पेमेंट होना था, पेमेंट हो रहा है 1 जुलाई को, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है इस 3 महीने का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी? आपके हिसाब से क्या होगा, बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं पेनल्टी, कुछ बच्चे कह रहे हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए एक बात बताइए लॉजिकली, जो लोग पेनल्टी कह रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मैंने आपसे पैसे लिए, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम यू and wish to be repaid on 1st April, but I paid on 1st July. I made the delay in 3 months. Whether you will not charge the time value of money from my side? क्या आप कॉम्पनसेशन नहीं लोगे? अदरवाइज तो फिर दिक्कत ही नहीं है, मैं तो फिर 1 साल बाद दूंगा। अगर ये लॉजिकल कॉम्पनसेशन नहीं है, रीजनेबल कॉम्पनसेशन नहीं है,
तो फिर तो मैं 1 जुलाई को दूंगा, मैं तो दूंगा 1 दिसंबर के बाद, और बाद में दूंगा कि जब भी दूंगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। यानी कि जितना मैंने डिले किया उतने का मुझे कॉम्पन देना चाहिए। और जो ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है, यानी कि जो लॉस के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी डैमेज। तो ये जो लॉस के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया 10% ऑन 1000 रुपीज, इट इज इन द नेचर ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस, नॉट पेनल्टी। अब क्लियर है ये बात? अगर 10% चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग 10% ऑन 1000, इट इज द नेचर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, एंड दिस इज द लिक्विडिटी डैमेजेस, नॉट द पेनल्टी। लॉजिकली होना चाहिए। चलिए इतनी बात। तो लॉ सेज a condition for payment of interest, a condition for payment of interest in case of default is not in the nature of penalty if interest is reasonable. Clear itni baat? Second point, a condition for increase interest from the date of bond and not from the date of default is in the nature of penalty and relief is granted. It means I am charging the interest against, I am charging the interest 1000 plus 100, 1100 पेमेंट मुझे मिलना था फर्स्ट अप्रैल को. I have to receive the payment of first April is 1100, but I am charging the interest 10% for April to July and 10% for January to April. It means I am again charging the interest from the date of bond, that is 1st January. This is more than the loss. आप चार्ज कर चुके, यू ऑलरेडी चार्ज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू अप्रैल. यू कैन नॉट चार्ज डबल अमाउंट. इफ यू आर चार्जिंग द डबल अमाउंट, दिस इज कॉल्ड द पेनल्टी, एंड डेफिनेटली इन केस ऑफ पेनल्टी कोर्ट विल ग्रांट द रिलीफ. If you are charging the interest from the 1st April to 1st July, it is the nature of damages, liquidated damages. But if you are charging double interest from the 1st January to 1st April, it is the nature of penalty. Clear हुआ? आपकी क्वेरी करके लेता हूं, पहले समझिए कंसेप्ट. ठीक है. सो अ कंडीशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बॉन्ड एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी एंड रिलीफ इज ग्रांटेड अगेंस्ट इट. A condition in a bond for payment of compound interest. If we are charging 10% interest on 1000 from 1st April to 1st July, is simple interest. If we are charging the 10% on 1100, the amount to be payable on 1st April, and we are charging the interest 10% on 1100, it is the nature of compound interest. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट. इट इज वैलिड, रीजनेबल, एंड दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी डैमेजेस, नॉट द पेनल्टी. अ कंडीशन इन ए बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए हायर रेट, देन इट इज द नेचर ऑफ पेनल्टी. तो इस पूरी कहानी में क्या समझ में आया? इफ यू आर चार्जिंग 100 rupees, 10% on 1000 for the period of default. Period of default is 1st April to 1st July if the liquidity damage. यानी कि आप जो डिफॉल्ट पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का, उसका सिंपल ब्याज चार्ज कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? लिक्विडिटी डैमेजेस. इसी पीरियड का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इफ यू आर चार्जिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट at the rate which was decided at the time of contract, 10% rate थी, rate was 10%, you are charging the 10% interest for default period, but compound interest, it is perfectly liquidity damages. अगर आपने इस पीरियड
जो डिफॉल्ट पीरियड है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक के अमाउंट पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया, उसी रेट पर जो रेट पहले थी वो भी लिक्विड डैमेज कहलाएगा। लेकिन आपने एक्स्ट्रा रेट से चार्ज किया, सपोज इन प्लेस ऑफ 10% यू आर चार्जिंग 12%, then 2% is in the nature of it, right? If you are charging double interest, first interest you already charged 1000 का, आपने 100 ऐड किया, that amount is 1100. Now in case of default you are charging the again interest for this period January to April. Now this part is the penalty. इतना क्लियर हो गया? 1 जनवरी से 1 अप्रैल का आपको 100 रुपए ब्याज मिलना था, अब आपने क्या कहा, डिफॉल्ट हो गया, तो भैया मुझे 100 रुपए तो वो चाहिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई की 100 रुपए चाहिए, और 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल के 100 रुपए एक और चाहिए। इट मींस आई एम चार्जिंग 300 रुपीज एट इंटरेस्ट। In this case, 100 rupees which are charging double for the period of 1st January to 1st April is penalty. And for penalty, court always give the relief. Penalty के लिए court हमेशा relief देती है, पर compensation जो liquid damages है उसके लिए relief नहीं मिलती ना। अब आते हैं आपकी बातों पे। चलिए डिस्कस कर लिया, लिक्विडेटी डैमेज डिस्कस कर लिया रितु बेटा। Sir, if interest is charged at higher rate after 1st April, then it will be penalty. Yes, I have already discussed, beta. Sir, ये 4 points में difference बता दीजिए। I have discussed beta already. Shoaib is asking, sir, क्या compound interest at the time of contract decide था? अगर नहीं भी है, if not decided that compound interest will be charged or at the on the default in making the payment, even that it is allowed, right? तो जो 4 point difference आया, what is the 4 points? First, बस एक छोटा सा point याद रखो कि interest should be charged once. If you are charging interest for this period once, it is liquidity damages. You are charging same rate of interest for this period, it is again liquidity damages. If you are charging for this period higher rate of interest, it is penalty. If you are charging double rate of interest for this period, it is penalty. If you are charging compound interest for this period, it is again a liquidity damage. अब क्लियर हो जाना चाहिए। भूमिका क्लियर हो गया, कृष्णा क्लियर हो गया, ओके। यहां तक अब क्लियर हो गया हो तो फिर मैं वापस आऊं उसके पास, ठीक है। This is the provision. Liquidated damages represent a sum fixed or ascertained by the parties in the contract which is fair and genuine pre-estimate of probable loss that might ensure as a result of breach if it take place. A penalty is a sum named in the contract at the time of formation which is disproportionate to damages. कोई संबंध नहीं है damage से. Likely to accrue as a result of breach. Court may relief against this penalty. In English law, हालांकि relevant नहीं है, this is not relevant for you, but for information. Under English law, liquidated damages are enforceable, but penalties cannot be claimed. ठीक है बच्चों, एक बार और पढ़ लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। Now, the second remedy is rescission of contract. Very simple. You are not performing, okay, need not to perform. आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मैंने कहा ओके, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए. Both parties are agree for the breaking of contract. When a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as resigned. In such a case, he becomes free from all obligation under the contract and is entitled to compensation for any damage
that he might have, कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो दूसरी ने कहा ओके डन, लेकिन मेरे को जो नुकसान हुआ वो तो मैं आपसे क्लेम करूंगा. एग्जाम्पल नंबर 5. A promises B to deliver 50 bags of cement on a certain day. B agrees to pay the amount on receipt of goods. A failed to deliver the cement on the appointed day. Now B is discharged from liability to pay the price. जब आपने तोड़ दिया तो मेरी कोई liability नहीं है. अगर मुझे लॉस होता है तो मैं आपसे compensation claim कर सकता हूं. Suit for quantum merit. Quantum merit का मतलब होता है, please note down the meaning of quantum merit means as much as earned. As much as earned. जितना काम हो गया उतने का पेमेंट मुझे कर दो. The phrase quantum merit literally means as much as earned according to the quantity of work done. The claim on quantum merit must be brought by a party who is not at default. जिसने default नहीं किया वही compensation claim कर सकता. However, in certain cases, the party in default may also sue for the work done if the contract is divisible. अगर कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 रूम पेंट करने हैं, एक पेंट कर दिया एक नहीं किया. सो फॉर एग्जांपल 2 rooms have to be painted, have to be polished, but 1 room has been made paint by the painter, but second is pending, so he can claim the payment for first room. Following are the cases in which a claim or quantum merit may arise when an agreement is discovered to be void. What happened? You have entered in the contract, but due to some reasons contract become void. But जितना काम हो गया, the work already done, payment can be claimed for that. See, if an agreement is discovered to be void or become void, any person who has received any advantage under such contract or agreement is bound to restore it or to make it compensation for it to the person from whom he received it. जितना आपको बेनिफिट मिला, कुछ मिला, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो जितना बेनिफिट मिला उसका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा. सी द एग्जांपल नंबर 10. A agrees to deliver 100 kg of rice to B at a price of ₹40 per kg. The rice were to be delivered in 2 installments of 50 kg each. A delivered the first installment but failed to supply the second due to some unavoidable reasons. B must pay for 50. A ने प्रॉमिस किया कि वो 100 बैग डिलीवर करेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन एक तो चली गई इंस्टॉलमेंट पर दूसरी का पूरा करना ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन. किसी का लॉस नहीं था, सपोज लॉ चेंज हुआ और वो परफॉर्मेंस वॉइड हो गया. इस केस में जो माल आ गया है उसका पैसा बी को देना पड़ेगा. Bhumika is asking, sir, if a house is half painted but suddenly it was destroyed, so the payment has to be made for such half painting. Definitely yes. लॉजिकली सोचिए ना, अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ अपने यहाँ पेंटर के यहाँ, मेरा कोई घर है उसको पेंट करना है, उस बेचारे ने आधा काम कर दिया और घर गिर गया, तो उस बेचारे का दोष है. जितना काम किया उसको पेमेंट तो लेगा ही लेगा. ठीक है ना. Where something is done or delivered without intention to do gratuitously. Gratuitously means without any compensation, as a gift. कि मैं कोई चीज डिलीवर कर रहा हूं पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए. मुझे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना था, उसका मुझे पैसा चार्ज करना था. तो जो चीज आपको मिल गई, आपने बेनिफिट ले लिया, तो आप उसका कॉम्पनसेशन देंगे. सी, where a person does some act or delivers something to another person with the intention of receiving payment for the same, in such a case the person is bound to make the payment if he accepts such services or goods or enjoys their benefit. See the example of take the example of Domino's pizza. You order, your flat number is 101, you order the Domino's pizza, you order Domino's for pizza, and delivery boy have wrongly made the delivery at 102. आपने घर का नंबर 101 है, फ्लैट का नंबर, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, गलती से उसने 102 पे दे दिया, and the person who is in 102 has consumed the pizza. Now he is liable to make the payment. जितना बेनिफिट लिया उसका पेमेंट करना पड़ेगा.
क्योंकि पिज्जा मैन या डोमिनोज हैज नो इंटेंशन टू गिव इट एज ए गिफ्ट और विदाउट एनी प्राइस, राइट? See the example, A trader leaves his goods at B's place by mistake. A ने अपना कुछ सामान B के घर पे गलती से छोड़ दिया और B treat इसे as own and use. B ने इसे अपना मान लिया और यूज कर लिया. Now B has to make the compensation to A. Very simple. Any doubt on this point? Gaurav is saying, sir, this is like quasi contract. You can say yes. Okay. Next point. Where the contract is divisible, part हो सकते हैं जिसके. Where the contract is divisible and one party had enjoyed the benefit of part performance, the other party may sue on the quantum merit. X wrongfully revoked Y, his agent authority, before Y could complete the duties. X could recover as a quantum merit for the work he had done and the expenses he had incurred in the course of his duty as the agent. X ने Y को एजेंट अपॉइंट किया लेकिन कुछ काम की वजह से हटा दिया. जितना काम किया Y ने उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता. Manish is saying, sir, can I claim compensation from Domino's due to late in delivery? Yes, you can say, because उनका कहना ये है, पिज्जा मैंने मंगाया, मेरा फ्लैट नंबर 101 है, गलती से पिज्जा चला गया 102 पर, उसने ले भी लिया, तो आप तो भैया क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपके पास दोबारा आएगा, लेट हो गया, तो आप तो डोमिनोज से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो. और डोमिनोज किससे क्लेम करेगा? 102 से. ठीक है. Now, fourth remedy is for a specific performance. Where damages compensation is not adequate remedy. यानी कि लॉस इस तरह का है कि हम उसे compensation दे रहे हैं, उससे उसका भला नहीं हो सकता. Loss is of such a nature that monetary compensation cannot satisfy. And if court thinks so, it may order for a specific performance. Like, you have booked a room. Suppose you can say that you have booked the executive room in a hotel with your family. But when you reach the hotel, you find that all executive rooms are booked. Now, in this case, monetary compensation will be satisfactory for you. Answer is no. You will say, I need the room because I am with my family. And in this case, the hotel has to provide a room to you, which should be at the level equal to the executive room or higher, not the lower. And he cannot charge anything extra for this higher room, which is provided by the hotel. आप होटल में गए, आपने होटल रूम बुक किया, एग्जीक्यूटिव रूम, आप फैमिली के साथ पहुंचे, होटल वाले ने कहा कि साहब रूम तो सारे भरे हुए हैं एग्जीक्यूटिव के, अरे किसी ने बुक कर दिया, हमारे कोई आए थे उन्होंने बुक कर दिया, ध्यान नहीं रहा हमारे को. होटल कैन नॉट डिनाई. उसका ये इस केस में मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है. होटल हैज टू प्रोवाइड रूम एट लीस्ट दैट लेवल और हायर लेवल, उसी लेवल का, उससे ज्यादा का, और वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर सकता. तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल परफॉर्मेंस. Where damages are not an adequate remedy in case of breach of contract, the court may, in its discretion on a suit for specific performance, direct party in the breach to carry out its promise according to the terms of contract. But a specific performance not granted. So this is again important part. This is the exception for this point. Please remember, please learn these. याद कर लीजिए बच्चों इनको. Monetary, where monetary compensation is an adequate relief, in that case, specific performance cannot be granted. Contract is of personal nature.
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीचिंग, इस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कोर्ट. जब कोर्ट को ये लगता हो कि it cannot supervise whether work is done according to the order of the court. Where contract is ultra vires. Ultra vires used in Companies Act normally. So please underline the meaning of ultra vires. Ultra vires mean, ultra means beyond, wires of the power. Beyond the power. अगर कंपनी की ऑब्जेक्ट से बाहर कोई काम हो रहा है तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा. कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कोई काम हो रहा है तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा. लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, सूट फॉर इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर. प्लीज फॉर राइट द मीनिंग ऑफ इंजंक्शन is stay order. Stay order. Where a party to contract is negating the terms of contract. Contract की terms को पूरा नहीं कर रही. Is not performing according to the terms of contract. The court may, by issuing an injunction order, stay order, restrain him from doing what he promised not to do. So रोक सकते हैं उस करने के लिए जिसको करने के लिए उसने मना किया. See the example number 13. And a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, he contracted to act for some other producer, held he could be restrained by injunction. And एक फिल्म स्टार थे, उन्होंने पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से काम करने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल तक, बस इसी पीरियड में उसने किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, स्टे ऑर्डर लगा सकती है. One more example. A singer agreed with B to perform at his theater for 2 months on a condition that during the period he would not perform anywhere. In this case, B could move to the court for grant of injunction restraining A from performing in other. A ने सिंगर है, कॉन्टेक्ट किया B से कि 1 साल 2 महीने तक उन्हीं के थिएटर में वो गाना गाएगी. अगर वो कहीं और गाना गाती है तो उसके लिए B कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकता है. ठीक है. So this was the concept of remedies for breach of contract. Now time for penalty shootout. But before it, सर अगर किसी की गुडविल या रेस्पेक्ट खत्म हो गई हो, कम हो गई हो, तो इसका भी मल्टी कंपनी नहीं ले सकते. ठीक है, ये डिसाइड कोर्ट करेगा कि किसकी रेपुटेशन कम हुई है, ज्यादा हुई है. अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन विल बी टेकन. शुरू करें बच्चों. मैं भी आंसर नोट करता जाऊंगा, आप आपको चेक भी करने हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. क्वांटम मेरिट मीन्स a non-gratuitous promise, an implied promise, as much as earned, as much as paid. Second question. A contract to marry B. Before the agreed date of marriage, A marries C. Here, B is entitled to sue A for actual breach in express manner, anticipatory breach in express manner, actual breach in implied manner, anticipatory breach in implied manner. अंजलि पूछ रही है मानहानि के केस में कैसे कॉम्पनसेशन किया जाता है, करना किसी के ऊपर आपको, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए, देन यू कैन फाइल थ्रू द कोर्ट. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. Remedies open to a person suffering from breach of contract are. Remedies open to persons suffering from breach of contract are suit for damages, suit for quantum merit,
Suit for injunction, all of the above. In case of anticipatory breach, remedies available to aggrieved party are: he can wait till due date, he cannot claim damages, he has no right at all, none of the above. Which is the best option? You have to select the best option. Saurav is asking, sir, manhani क्या होता है? Defamation, case for defamation, loss of reputation. Fifth point. An singer contracted with a theatre manager to sing a song. Due to her illness, she failed to perform the contract. She received 20,000 as advance and must refund 20,000 and need not to refund 20,000. They must enter into new agreement. None of these. A specific performance may be ordered by the court when the contract is voidable, damages are an adequate remedy. Damages are not an adequate remedy. Defaulting party is not ready to pay damages. In case of breach of contract to marry, which remedy is available? Suit for exemplary damages, suit for quantum merit, suit for injunction, none of these. देखो आंसर्स भी आ गए आज तो चलिए डिस्कस करते हैं quantum merit means as much as earned. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन this is anticipatory breach in implied manner. अब तो ऐसा लग रहा है आंसर्स आ गए आपके कि आपको समझ में आना शुरू हो गया पूरा लॉज क्लियर हो गया अब तो remedies open to a person suffering from breach of contract are all of the above. In case of anticipatory breach, he can wait till due date. फिफ्थ केस में क्या होगा बच्चों एंड मस्ट रिफंड 20,000 वापस करने पड़ेंगे A specific performance may be ordered by the court when damages are not an adequate remedy. Seventh, in case of breach of contract to marry, which remedy is available? Exemplary damages. So who is the first lucky one? Miss Ruhani Jain, congratulations. Miss Niranjana, congratulations. Miss Anshika Jain, congratulations.
Miss Komal Preet Kaur, congratulations. चलिए. So congratulations all of you who have given all the correct answers. And Miss PM is asking, sir, if we had missed other job opportunities due to work in partnership, can he claim compensation for it? No, I don't think so. He compensation claim कर सकता है इसकी. Okay. So once again, congratulations all of you and best of luck and have a good day. And this is from my side. All of you have enjoyed the law, but revise जरूर कीजिएगा. Please revise once again. आज ही आप revise कर लेना, कल के लिए मत छोड़ना. In the next class, we will discuss the unit number 6, and next to next class we will discuss the presentation in the exam. So thank you so much, everyone. Thank you.